This is EVS lesson number 16, more about animals. Animals के बारे में ज़्यादा जानकारी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है. We all know that there are different types of animals around us. हम सब जानते हैं हमारे आसपास में different kinds of animals. So we have different varieties of animals we can see around us. Some live on land, some in desert, while others live in water. So there are some animals, they live on land surface में they live, and some they live in desert area. Desert means मरुभूमि area में रहते हैं. और some lives in water animals are there. Okay, and all animals live in their natural homes, which is also called their habitat. So they have their own houses. See, we have our own house, right? So wherever we go, play, do all our works, but finally we come to our house. Okay, that is our house. So the same way, all the animals, so they live in their own houses or homes. That is called habitat. Okay, habitat. Based on their habitat, animals are of the following types. So according to their staying accommodation or their houses, we divide them into different categories. Okay, उनके रहने के जो जगह है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उनको different animals के रूप में हम categorize करते हैं, differentiate करते हैं. Okay, first one is land animals. These animals live on land like dog, horse, sheep, cow, etc. So these are the animals, they live on land. जैसे धरती पर रहने वाले, जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो animals है उनको हम कहते हैं land animals. Okay, land animals can be further divided into many categories. Okay, first dog, horse, sheep, cows, and what are the animals? What are other animals you can see on land? So you can name all the animals, like monkeys, lion, tiger, whatever you say, they all live on land. Okay, and we can divide them also. The land animals also we can divide into different categories. First one is wild animals. Okay, the natural habitat of these animals is jungle. Some examples of wild animals are lion, leopard, tiger, etc. So natural habitat, normally they live in the jungle. They don't live in the houses or in the town areas, okay, villages or anywhere where people live. They don't live nearby the people's residence. जैसे हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ उनके पास ये एनिमल्स नहीं रहते हैं, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स. ओके, दे लिव इन द जंगल्स. सो नॉर्मली दे कहाँ रहते हैं, बहुत बड़ा जंगल में रहते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड एनिमल्स. सो एग्जांपल्स, lion, tiger, leopard. Okay, they all live in the jungles. Okay, then we categorize in the second one as a domestic animals. These animals are kept in farms, house or farms. Okay, farmhouses and farms. They are tamed and are very useful to us. Some examples of domestic animals are cow, goat, horse, etc. So we have second category, that is called domestic animals. Domestic animals क्या क्या है, हम लोग अपने घर में पालते हैं. ठीक है, हम अपने मदद के लिए घर में इन एनिमलों को पालते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, वो भी हमें मदद करते हैं. हॉर्स हो गया, गॉट, काऊ. अब लोग जानते हैं काऊ के द्वारा हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. एक गॉट भी हमें एक प्रॉपर्टी के समान हमें ज़्यादा बढ़ने के कारण इसमें से हमें बाल, जैसे गर्म कपड़े वगैरह बनाने के लिए यहाँ से बाल मिलता है. और हॉर्स जो है हमें कुछ सामान ले जाने के लिए, लॉन्ग सफ़र के लिए पुराने समय में यूज़ किए थे. तो आजकल भी पीपल यूज़ ऑल दिस एनिमल्स फॉर देयर हेल्थ. ओके, एंड डेजर्ट एनिमल्स, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सम एनिमल्स इन डेजर्ट. Their body parts are modified to adjust in the desert. A camel is an example of desert animal. तो कुछ एनिमल्स जो हैं डेजर्ट में ही रहते हैं, वो उनके बॉडी पार्ट्स जो है उसी के अनुसार बनाए हुआ है. ठीक है, तो चमड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि डेजर्ट में ज़्यादातर क्या होता है,
धूप ज़्यादा गर्मी होता है, तो उस गर्मी को संभालने के लिए उनके चमड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। उनका बॉडी पार्ट्स भी उस तरह बनाया होता है। वो नेचुरली कहाँ रहते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट इज डेजर्ट, ओके। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ डेजर्ट एनिमल्स। Then we have some other animals, they are called water animals. See, some animals live in water and are called water animals. Some examples are fish, shark, octopus, etc. See, some animals we can see them in the water. अगर मान लो अगर फिश को ज़मीन में रखेंगे मर जाता है, अगर कोई भी अगर लैंड एनिमल्स को पानी में डालेंगे मर जाता है। तो according to their habitat we divide them into different category. So first one is wild animal, they live in jungle. Then domestic animal, उनको हम पालते हैं, ठीक है, घर में रहते हैं, अपने घर में अपने एरिया में। और डेजर्ट एनिमल्स, सो देयर चमड़ा वगैरह बहुत स्किन वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। और फोर्थली वी सी वाटर एनिमल्स, सो दीज एनिमल्स दे कैन नॉट लिव इन दी ऑन द लैंड, ओके, दे सर्वाइव देमसेल्व्स ओनली ऑन द लैंड इन द वाटर, ओके। Examples fish, shark and octopus, okay. So they are called water animals. Then arboreal animals, so okay, these animals live on trees. So मैंने बोला था मंगी लैंड में, लेकिन उसका हैबिटेट कहाँ है, ट्री में होता है। सो इसलिए इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं arboreal animals. So these animals live on trees. they पेड़ में ही बड़े बड़े ट्रीज में रहते हैं, बर्ड्स वगैरह, ठीक है। So they all live on trees. They are called arboreal animals. And further we see underground animals. These animals make they make burrows under the surface of the ground and live there. Some examples of such animals are snake and rabbits. Have you seen the snake? So they live under the जमीन के अंडर, अंडर दी सरफेस, जैसे लैंड होता है उसके अंडर रहते हैं, तो होल बनाकर उसके अंदर रहते हैं। और रैबिट भी वैसे ही रहते हैं, कहीं भी जाओ रैबिट क्या करते हैं, और कहीं भी पहाड़ कोई भी होता है उसको शेड बनाकर उसके अंदर रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड एनिमल्स, ओके, दे लिव अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ओके। एंड स्नो एनिमल्स, सम एनिमल्स लिव इन स्नो, दे कैन सर्वाइव इजीली देयर। These animals are snow leopard and polar bear, okay. So some animals they live only in the snowy area. So normally their body structure and everything made according to it, okay, according to the situation. So they can manage and survive themselves in the snowy area. So they are called snow animals, snow leopards and polar bear, okay. They will be fully white in color, okay. Normal leopard and these snow leopards are very different in their structure and color, everything, okay. Characteristics of animals. So अभी हम लोग इसके गुण को देखेंगे. Animals are also living beings and have some characteristics just as other living beings. These characters are, okay, so animals maybe can live in different places, different areas, but they have their own characters, okay. उसका गुण होता है, तो वो क्या क्या गुण हम देख सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सबसे पहला गुण क्या है, एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। वाटर एनिमल्स स्विम, सम एनिमल्स वॉक, सम रन, सम crawl while birds fly. Okay, so every animal they move from one place to another. एक जगह से दूसरा जगह जाने वाले हैं ये एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनका जाने का तरीका अलग अलग होता है। वाटर एनिमल्स पानी में स्विम कर कर जाते हैं, और सम एनिमल चलते चलते जाते हैं, कुछ दौड़ कर जाते हैं, कुछ क्रॉल कर कर जाते हैं, लेकिन बर्ड्स वगैरह फ्लाई कर कर जाते हैं। ये इनका मूवमेंट का तरीका। और एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर। नॉर्मली हर एनिमल को फूड और वाटर का ज़रूरत है। वाटर और फूड बिना जी नहीं सकते हैं, ठीक है। नीड फूड एंड वाटर टू लिव। फूड गिव्स देम एनर्जी एंड हेल्प देम टू ग्रो। फूड इन खाने के द्वारा क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, हम धीरे धीरे
बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, अच्छा फूड लेना चाहिए, तभी हमें ग्रोथ होता है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट फूड्स, सो एवरी एनिमल ईट देयर ओन different kind of foods. Some animals like cow, goat and deer eat green plants. Okay, some animals eat green plants. Such animals are called plant eaters. So उनको क्या कहते हैं, plant eaters कहते हैं। जो animals grass वगैरह खाते हैं उसको plant eaters बोलते हैं। Some animals like tiger, lion and snakes eat flesh of other animals. Such animals are called flesh eaters. So दूसरे कुछ एनिमल्स जो हैं टाइगर, लायन एंड स्नेक्स वगैरह दूसरे एनिमल्स का फ्लैश को खाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लैश ईटर्स। ओके, देन एनिमल्स ब्रीथ, देन अनदर गुण क्या है, एनिमल्स ब्रीथ। एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ लाइक अस, जैसे लाइक हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वैसे एनिमल्स भी सांस लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। सो हर एक एनिमल्स को ब्रीथ करने का ऑर्गन्स, जो बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर गिल्स, लंग्स एक्सेट्रा। ओके, उसको कहते हैं गिल्स और लंग्स। तो हम लोग नाक के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स ग्रो, कॉमनली एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रो। एनिमल्स हैव यंग वंस विच ग्रो इनटू अडल्ट। Some animals have babies while other lay eggs. A chick grows into a hen and a pup grows into a dog. So normally animals बढ़ते जाते हैं, ठीक है। वो उसमें कुछ लोग अच्छा पैदा करते हैं और कुछ अंडे देकर उसमें से बच्चा निकलाते हैं। अब देख सकते हैं हैन, ठीक है, हैन के बच्चों को क्या कहते हैं, चिक बोलते हैं, और डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बड़े होकर फुल ग्रोथ में हो जाता है, ठीक है। एनिमल्स फील, एनिमल्स ऑल्सो फील जस्ट लाइक अस, जैसे हमें भी फीलिंग होता है, ठीक है। हमें भी कई बार गुस्सा होता है, प्यार होता है, और मतलब कि अलग अलग जो फीलिंग्स हमारे अंदर होते हैं, उस तरह एनिमल्स को भी फीलिंग्स होते हैं। दे फील गुड व्हेन वी लुक आफ्टर देम और शो लव फॉर देम। व्हेन वी आर क्रूअल टुवर्ड्स देम and hit them, they become angry and can harm us. Normally animals also get this kind of feelings. जब हम लोग उसको अच्छा से देखभाल करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर हम लोग उसको छेड़-छूड़ करते हैं तो वो हमें भी, हमारे ऊपर भी गुस्सा करते हैं, कई बार हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो ठीक है, एनिमल होम्स, just as we need homes, animals also need homes or shelter. A place where an animal lives is called his shelter. Normally just like हम लोग रहते हैं, घर में रहते हैं, उस तरह एनिमल्स को भी अपना होम का ज़रूरत पड़ता है, उनका शेल्टर, जिसे रहने का जगह का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये एनिमल जहाँ भी रहते हैं उसको हम कहते हैं शेल्टर। ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स। अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग होम्स होता है। डॉग लिव इन अ कैनल, सी डॉग को हम बोलते हैं, डैग जहाँ रहता है डॉग उसको हम कैनल बोलते हैं। ये हॉर्स लिव्स इन स्टेबल, सी जहाँ हॉर्स रहता है उसको स्टेबल कहते हैं, ठीक है। ये काउ लिव्स इन अ शेड, जहाँ काउ रहता है उसको शेड बोलते हैं, ठीक है। और क्रोज इन लिव्स इन नेस्ट, कोई भी बर्ड्स होता है जो वो नेस्ट में रहता है। और रैबिट लिव्स इन ब्यूरोज, रैबिट वगैरह कहाँ रहता है, ब्यूरोज में। ओके, व्हाट आर पेट्स? नाउ पेट्स के बारे में, पेट्स मीन्स हमारे प्यारे एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स दैट वी कीप एट होम फॉर आवर रिक्रिएशन आर पेट्स। हम अपने घर में अपने प्यार के लिए, अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मली टाइम पास के लिए लोग क्या करते हैं, पालते हैं, और कई बार इवनिंग वॉक के लिए ले जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पेट्स। ओके, सम कॉमन पेट्स आर कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स एंड पैरट्स। सो दीज आर दी कॉमन पेट्स। नॉर्मली हर घर में डॉग्स होता है, कैट्स होता है, कुछ लोग रैबिट और पैरट्स पालते हैं, सो दे आर कॉल्ड पेट्स। पेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे परिवार के एक सदस्य बन जाता है ये पेट्स। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेट्स एंड फीड देम वेल। हम क्या करना है, अगर आपके पास अगर पेट्स हैं हो तो आप उनको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए, उनका अच्छा से खाना वगैरह खिलाकर अच्छा से देखभाल करना चाहिए।
Like plants, animals are also our friends. Like plants की तरह animals भी हमारे friends होते हैं. We should be kind to them and never tease them. जैसे animals को कभी भी हम क्या नहीं करना चाहिए, tease नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए. Have you seen animals on road? They are stray animals. They move around in search of food. तो जैसे सड़क उड़क में आप देखे होंगे कुछ कुत्ते होते हैं, तो ओके कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ बिल्ली होते हैं, कुछ एनिमल्स, उसको कहते हैं स्ट्रे एनिमल्स. उसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं होते हैं. तो वो क्या करते हैं, इधर उधर मुँह होकर घूम फिर कर खाने के लिए खाने की तलाश में रहते हैं. ओके, दो दे डू नॉट लिव इन आवर होम्स वी शुड बी काइंड टू दम. बेशक वो हमारे घर में नहीं रहता है, फिर भी हम क्या करना चाहिए, उन एनिमल्स को भी हम प्यार से व्यवहार करना चाहिए. वी मस्ट नेवर थ्रो स्टोन एट दम, रादर ट्राई टू फीड दम. उसके ऊपर मतलब कि पत्थर उत्थर नहीं करना चाहिए, पथराव नहीं करना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल उनको मदद करना चाहिए या खाना खिलाना जरूरी है. वी मस्ट नॉट थ्रो प्लास्टिक विद गार्बेज इन दी डस्टबिन एज समटाइम्स these animals eat from dustbins too. So जैसे हम कुछ वेस्टेज डस्टबिन में कूड़ा में फेंकते हैं, तो we should not throw away the plastic papers because these animals they eat from the garbages or dustbins. Okay, क्योंकि ये प्लास्टिक खाएंगे तो वो बीमार हो जाते हैं. कोई भी देखभाल के लिए उनके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं होता है. तो इसलिए प्लास्टिक के साथ किसी भी वेस्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए. If they swallow plastic, it can cause them harm. तो वो प्लास्टिक खाएंगे तो उनको काफ़ी बीमार हो सकते हैं. Now, life cycle of a butterfly. अभी बटरफ्लाई का एक लाइफ साइकिल देखेंगे. ये बटरफ्लाई is the most beautiful of all insects. बटरफ्लाई जो है सभी इंसेक्ट से बहुत सुंदर है. ठीक है. Do you know that an egg changes into a butterfly? Okay, study the stages of how an egg changes into a beautiful butterfly. So उनका egg जो है, अंडे जो है, अच्छा सा सुंदर सा बटरफ्लाई बन जाता है. सी यहाँ कैसे इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है. सबसे पहले एग, ठीक है, ये लीफ में एग दिया होता है. उसके बाद एक छोटा सा खेड़ा जैसा बन जाता है. ठीक है. देन कैटरपिलर है ना, दिस स्टेज में आता है. फिर उसके बाद कहते हैं प्यूपा, एक खबर सा बन जाता है. ठीक है, उसके अंदर रहते हैं और स्लोली अडल्ट बन जाता है ना. इसके अंदर से प्यूपा से निकल आकर एक अडल्ट एमर्जेस. देन फाइनली दे बिकम बटरफ्लाई. सो दीज आर दी स्टेजेस 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस क्रॉस कर एक फुल बटरफ्लाई बन जाता है. ठीक है, फाइन. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द बुक एक्सरसाइज पार्ट. ओके, here we have fill the blanks. All the animals live in their natural homes, which is also called their, उनका natural homes को क्या कहते हैं, या habitat. ठीक है, HABITA habitat. So all the animals की जहाँ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट. ये डियर इज अ ग्रास ईटर. ओके, डियर ग्रास ईटर. ओके, एनिमल्स दैट वी कीप एट होम्स फॉर आवर रिक्रिएशंस और पेट्स. रिक्रिएशंस और पेट्स. सो रिक्रिएशन के लिए जिन एनिमल्स को हम पालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेट्स कहते हैं. ओके, ऑल एनिमल्स हैव डैश विथ ग्रो इनटू अडल्ट्स. टेल विच ग्रो इनटू अडल्ट्स. ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट parts to breathe. Okay, they have different parts to breathe. Okay, so all animals, different animals have different organs to breathe.
Okay, fine. So give one example of each of the following. A domestic animal. So domestic animal क्या बोल सकते हैं? Domestic animal, okay, dog. Okay. A desert animal. Desert animal, camel. A flesh-eating animal. Flesh-eating animal, lion. Lion नहीं बोलना, lion. An arboreal animal. Arboreal animal, monkey. Okay. An animal that lives underground. Animal underground में रहते हैं. A rabbit. Okay. A breathing organ. A breathing organ. What is called gill. Okay. Then a pet. Pet हम बोल सकते हैं cat. Okay. A domestic animal. Already यहाँ पर भी लिखा है ये domestic animal. Okay. Here we will make a wild animal. Okay. Okay. Here इसको हम काटते हैं, ठीक है. Wild animal हम लिखेंगे, ठीक है. Okay. Examples of wild animal is a tiger. Got it? Okay. So these are the book exercises you can write in your book. So here we have 3 questions. I'll send you the answer in the PDF form. Okay. Okay, this one is not right. Okay, this is wrong. This is not tail. Okay, young ones. Okay, young ones, they grow into young ones which grow into adults. Okay, all animals have young ones which grow into adults. You got it? Okay.